एक्सेप्टेबल गैस लेवल इन कन्फाइंड स्पेस। हाय गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड में। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द एक्सेप्टेबल गैस लिमिट इन ए कन्फाइंड स्पेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गो टू सी। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। मोस्टली इट इज आस्क्ड व्हेन यू आर अटेंडिंग ए इंटरव्यू फॉर दुबई, कुवैत, सऊदी और एनी गल्फ कंट्रीज। सो लेट्स गो टू सी। इट इज एसेंशियल टू नो द ऑक्सीजन, combustible and any other toxic gas levels in a confined space. Gas hazards are unpredictable and so that the confined space are dangerous. It is necessary to know the safe levels of different type of gases. Let's go to see first oxygen. According to OSHA standards, minimum safe level of oxygen in a confined space is 19.5% and the maximum safe level of oxygen in a confined space is 23.5%. So the minimum safe level of oxygen is 19.5% and the maximum safe level of oxygen is 23.5% in a confined space. Measurements of oxygen level are important. Low oxygen levels are harmful. Oxygen level must be measured prior to entering a confined space and should be monitored continuously throughout the work. So it is most important to regularly monitor the concentration of oxygen in a confined space. Confined spaces, oxygen concentration surpasses 23.5%. It is called oxygen rich confined space and could result in the ignition of combustible gases. Confined space में ऑक्सीजन लेवल का परसेंटेज इंक्रीज होता है, उसे जो है ऑक्सीजन रिच्ड कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है और वहाँ प्रेजेंट कंबस्टेबल गैसेस में आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है। लो ऑक्सीजन लेवल्स इम्पेयर जजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज nausea, vomiting and loss of consciousness. Let's go to see the next. Combustible gases. High concentrations of combustible gases are dangerous. There are two levels to check during measuring combustible gases in the confined space. The first one is lower explosive limit LEL and the second one is upper explosive limit UEL. Lower explosive limit LEL. This is the lowest concentration of a gas in the air that can combust or produces a flame when contact with an ignition source. LEL क्या होता है? ये हवा में प्रेजेंट न्यूनतम मिश्रण होता है गैसेस का जो कि इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आने से ही जलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपर एक्सप्लोजिव लिमिट UEL. This is the highest concentration of a gas in the air that can combust or produces a flame when contact with an ignition source. UEL गैसेस का हवा में एक उच्चतम मिश्रण होता है जो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आने से जलना प्रारंभ कर देती है। Gas concentration is below its LEL. It cannot ignite and the confined space is considered safe. Gas concentration is above its UEL. The gas is too rich and there is no enough oxygen for combustion. Now let's go to see lower explosive limits of combustible gases. Here we are going to see the LEL of different gases. Acetone 2.5%, hexane 1.1%, acetylene 2.5%, hydrogen 4%, ammonia 15%, isopropanol alcohol 2%, benzene 1.2%, methane 5%, butane 1.9%, methyl alcohol 6.0%, butyl alcohol 1.4%, methyl ethyl ketone 1.4%, carbon monoxide 12.5%, pentane 1.4%, diethyl ether 1.9%, propane 2.1%, ethane 3.0%, propylene 2%, ethyl alcohol ethanol 3.3%, styrene 0.9% in volume, ethylene 2.7%, toluene 1.1%, ethylene oxide 2.7%, xylene 1.1%. So these are the LEL level of different gases. You have to remember all the LELs of gases during inspection of confined space. Third, carbon monoxide and hydrogen sulfide. Carbon monoxide and hydrogen sulfides are gas hazards and both of these gases are extremely toxic. The LEL lower explosive limit and PEL OSHA's permissible exposure limit of these gases are hydrogen sulfide PEL of 20 parts per million ppm and an LEL of 4.0%. Means the PEL of hydrogen sulfide is 20 ppm and the LEL of hydrogen sulfide is 4%. Next, carbon monoxide PEL of 50 parts per million and an LEL of 12.5%. Means the carbon monoxide has PEL of 50 ppm and the LEL of carbon monoxide is 12%. So this topic is really very important and helpful for every HSC professional to know the LEL and UEL of gases for the confined space and this question is asked during the interview. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो
वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।